Hello, hello. थोड़ी देर बाद मुझे आधे घंटे बाद बात जिसको करते हुए चलते हैं टाइम बच जाएगा ये आपने रखा है अब आ जाइए सब लोग करो पहले हाँ कर दो कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभ क्या एक्चुअली क्या यहाँ से खाने का स्क्रीन है Good afternoon, everyone. On behalf of CSIR Central Road Research Institute, I warmly welcome all the distinguished guests, scientists, officers, and staff members present here for the celebration of National Technology Day. Well, I extend a warm welcome to Shri Ajay Tamta ji, Honourable Minister of State for Road, Transport and Highways. Accompanying him, Director CRRI, Dr. Ravi Shekhar, Dr. K. Ravindra, Head ILT, Dr. Vinod Karar, Head PME, and Dr. E. Madhu, Head CCN, all present on the stage. I am Amim Altaf Nabi, Scientist C from the Transport Planning and Environment Division, and it is my privilege to host today's program. National Technology Day is celebrated across the country to recognize the role of science, engineering, research, and technological innovation in nation building and societal development. The occasion reminds us that technological advancements are most meaningful when they contribute directly to improving lives. At CSIR-CRRI, this day reflects our continued commitment towards innovation and excellence in the field of road and transportation infrastructure. Today's celebration is even more special as we are honored by the gracious presence of Shri Ajay Tamta ji, who has kindly consented to grace this occasion as chief guest. May I request Honorable Director Ravi Shekhar sir to kindly welcome our chief guest Shri Ajay Tamta ji with a plant sampling as a token of our respect and warm regards. We will now move forward with the rendition of Rashtra Geet. I request all of you to kindly raise for the Rashtra Geet. सुजला सुफला मलयज शीतला
खल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे वृत खर करवाले के बोले माँ तुम्हें ओ बोले बहु बल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें रिद्धि तुम्हें मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्हें मा शक्ति হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমার ওই প্রতিমা ঘরে মন্দিরে মন্দিরে বন্দে মাতরম ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী কমলা কমল দল বিহারিণী वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिता धरणी धरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् Thank you all. To briefly introduce the event and set the context for today's celebration, I invite Dr. K. Ravinder, Chief Scientist and Head ILT, to kindly address the gathering. Thank you, Amim. Respected Honourable Minister for State Road Transport and Highways, Sri Ajay Tamta ji, and Director CSIR-CRRI, and Chief Scientist Dr. E. Madhu, and Chief Scientist Dr. CRRI, and my dear colleagues and media friends and officials from the ministry. Good afternoon you to all. And actually how it is happened, this program is we received an email from the ministry on 14th. Our minister would like to visit on the National Technology Day. So our director, on receiving the email, our director called a meeting and told let us have a National Technology Day celebration. And sir, this is the first National Technology Day celebration where ministry is attending. Thank you. Good round of applause to him. And as you all know, the National Technology Day, how it is celebrated, how it is come into picture. In 1998, we have a successful Pokhran test. In addition to, on the same day, we have also the Trishul missile test and maiden flight of Hansa 3. So, though we always remember the Pokhran test, rest 2 are we have also conducted on that day. So, during that, then Prime Minister is declared the May 11th, let us celebrate the Technology Day. So, that's how it is appeared, and we are celebrating every year. And this year, the National Technology Day theme is like responsible innovation for inclusive growth. So the takeaways from this year theme is responsible AI, artificial intelligence, and digital equity, boosting indigenous capabilities, where our Viksit Bharat and also the indigenous equipment development, where our ministries also visited some of our facilities. So due to the time constraint, we could not able to show you all the facilities, sir. And the national technological milestones
in terms of Pokhran test and as well as the key government initiatives in terms of Indian semiconductor mission 2 and also the national quantum mission. In this also the Anusandhan National Research Foundation is also come into picture. So with this background, I don't want to take much time. I would like to listen the minister's speech. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite Dr. Ravi Shekhar, Director CSIR-CRRI, to present an overview of the Institute's activities and ongoing contributions toward technology advancements. Please, sir. Presentation. Honourable Minister, Honourable Minister, State for Road Transport and Highways, Sri Ajay Tamta ji, distinguished dignitaries, senior officials from MOT, and my scientist, fellow scientists, and all the staff members and ladies and gentlemen. Good afternoon all. So I would like describe about the overview of the CRRI activities. Because time limitation, I would like to give a 5 minutes presentation instead of 10 minutes presentation. I would like to thanks to Minister because he has entirely walked through all the lab facilities, not only 4 lab facilities. So expansion joint and steel slag road, biobender, and also the geotechnical lab facilities and car driving simulator. So sir, with your permission, I would like to give the brief overview of the institute. So about the CRRI and the project funded by MOT, NHI and NHIDCL, and major achievement technologies and waste to wealth technologies. Sir, this is about this institute was established in 1952, and the first founder director was Jipkis, and currently I taken over on January 2026. Sir, mainly this institute have the 7 R&D institutes. So payment related engineering 3 labs है sir. Flexible payment division, rigid payment division, payment evolution division, and coming to infrastructure oriented bridge engineering division, geotechnical engineering division, and traffic and environmental, we have the traffic engineering and safety, and transportation planning and environment, sir. And already you have seen the various capabilities of CRRI, Central Road Research Institute. Mainly payment evolution, we start with the payment evolution, and also bridge health monitoring. And after that, we can come with the flexible payment, alternative material, waste to wealth, and also we can studied about the driving simulator and also behavior of the driver, traffic engineering, micro simulation and macro simulation. And coming to geotechnical engineering, landslide correction, landslide stability analysis, and application of waste to wealth material, various waste to wealth material. These are the various application areas. CRA already studied or investigated various materials, sir. Coming to the main object of this presentation or this meeting is mainly the CRRI services to MOT, NHI, NHIDCL. Particularly, these are the 3 organizations given a project last 5 years. 60 completed projects, sir. We have completed 60 projects, and ongoing projects are 32, and the total is 92 projects. The main key areas of we are working: quality audit at national highway construction, design review and consultancy, structural safety audit, and not only bridge health monitoring, and road safety audit, and road safety audits, and payment investigation, failure analysis, and research on new materials. For example, new material we have already investigated the steel slag, and also various copper slag, zero fix, various materials we have tested, and different payment layers, sir. Now coming to the one of the project performance PG grade bitumen binder classification for India. This project is a jointly funded project by CRRI and IIT Delhi, and this project was started in 2024, and 2027 is ending the project. The main object of this project is that PG bitumen binder classification, because in India the temperature varies to -22 45 degrees 50 degrees Celsius, because one particular guidelines which was developed by Indian Roads Congress cannot be able to fit in everywhere.
So that's why we need to study the performance grade bitumen binder classification. Dr. Shiksha Swarupakar is a project leader, and IIT Delhi and CRRI is investigating this project, sir. Because of the time limitation, I couldn't able to go in deep of the technical kind of things in this project. Now, finally, the outcome is the guidelines of the project. So coming to the another project, sir, implementation of war mix asphalt technology to construct road in cooler and high altitude region. Particularly, Dr. Ambika Behal is doing this project, and particularly the high altitudes, like temperatures are very low, and at that time you need a higher hot mix expert kind of the materials are required, and how it can be implemented. So what is the procedure and other methodology have been described here, sir, and also developed guidelines and also test various like Himalayan regions, and we have implemented this kind of the technology. Coming to another one, sir, like feasibility of using burnt crushed brick aggregates, cemented subbase layer in Udaipur, and these are the NH44, NHDCL has been given this like project, and this was practically implemented in various locations, and the waste of this brick burning material, which was used in the subgrade and also the base layers, and also we can see the sand and brick mixed samples for the application of the CTSB, and the different locations we have first we have tested in the lab, and then we implemented there, sir. Already you might have seen the various test facilities in geotechnical engineering. Another one is the cement grout bituminous mix for longevity of flexible pavement NHDCL road. So this is the like not only CZBM, this is a shortcut is the CZBM, not only like national highways, also useful for the urban roads, sir. This was implemented in various, particularly this one is moisture prone and high rainfall conditions, and highway and urban roads can be like implemented these kind of the technologies. And another one, sir, hill road widening using lightweight geoform blocks. Already you might have seen that innovative alternative for hill roads. So widening without destructing the hill slopes. So this is a major advantage of that application. So you might have seen the hill roads. So high altitude roads, for example, widening from initially the roads are the single lane roads, 3.75 meters carriageway, then widened for the 5.5 meters. And also after that, we are going for the 4-lane divided carriageway. So if you are disturbing as you said rightly in the morning various discussion in various labs. So the disturbing of hill slopes, for example, already it is a stabilized slopes are there, like 1 meter, like 3.5 meter single lane road is there. So if you disturb the stability, that is the corrections are required. So we have investigated all the slope corrections and other kind of things, sir. Now coming to the CRRI Uttarakhand related hill road connectivity, particularly Uttarakhand, we have done a lot of studies like structural audit, 12 structures we have done, Delhi, Saharanpur, Dehradun corridor, and also structural audit for 2 structures, Saharanpur bypass and Delhi Dehradun economic corridor. So a lot of works we have done, sir. Basically, I did my masters from the IIT Roorkee. 1997 I joined, and 99 I passed out, and I know the entered the Uttarakhand area and their condition and other kind of things, and particularly the land slopes we have worked, and our geotechnical team is very strong in the landslide analysis also. That is the main innovation we have done, and various projects we have received from NHIDCL. So coming to other kind of things, CRRI studied landslide in Uttarakhand particularly, and these are the various study areas. Each study areas, our team spent a lot of time and investigation and also testing, and also drawing is provided implementation, and after that also before study and after the study we have the correction measures we have done, and also after that we have seen mainly the landslide Uttarakhand area, particularly slope stabilization and remedial engineering solutions, including strategic support to Chardham and border infrastructure projects. So these are the main work we have done in the Uttarakhand area. And coming to the geotechnical experience, particularly Uttarakhand, Uttarakhand to Mizoram, Himachal to Ladakh, and even international assignment, CRRI possesses extensive expertise in landslide mitigation. Myself also worked in the Leh Ladakh areas, Sosoma, Sasrela. So altitudes are 18,000 feet. As a scientist, I visited the Leh Ladakh area, and also we have provided the alignment guidelines, and also the slope stability guidelines also we have provided.
along with the geotechnical engineering. So not only alignment, for example, if you see very good road you have constructed, if the subgrade is not good, or maybe slopes are not properly, corrective measures are not provided, or improper drainage system, so there is no use of the like the road will be deteriorated after immediately after 1 year. So this kind of the like work we have done, landslides, rock falls and subsidence also, and these are the main work we did it, sir. Particularly you can see here some of the areas, Leh Ladakh area. So we have collected the data, lidar and drone data we have collected, and we have studied the like snowfall, like snow area movement also, and also we have provided the snow sheds and also design also we have provided there, and also we have that was implemented in the particular 16th BRTF corridor. Another one is that implementation of geosynthetic reinforcement pavement. Already you might have seen the areas which were shown in the geotechnical area. So laboratory evaluation, geocell and geogrid and its combination. So before going to the implementation on the subgrade analysis, we will study in the lab, first level. Different layers, same kind of the layers we will be studied in the lab level, and the all kind of the engineering parameters, engineering measures will be studied, and then once it is stabilized, then we'll go for the implementation of the field. So that is the advantage of the facilities at the CRRI, sir. And another one is, this is a recent study which was done at the Kutch area, because it is a perennial problem, because Dr. P.S. Prasad is working in the border roads area, Indo-Pakistan border area, Kutch. So we have given a design, separate design for the for the particular road area, and this is a particularly the slopes and also the drainage facility system and stability of the slopes studied in the particular location, and design is itself is a typical design for the particular corridor. So coming to our landmark studies, sir, in India we have the first time we have developed the highway capacity manual. This was funded by the CSIR, and we have taken different data throughout India, single lane road, 4-lane road, and also express highway, and also hill terrains, different terrains we have taken the data, and we have developed the capacity manual. Earlier we have depended on the highway capacity manual of United States. So those guidelines cannot be implemented for the mixed traffic condition for the India. So that's why we have developed first time in India, sir. So this was inaugurated by Nitin Gadkari sir, and in the February 2018. So after that, sir, we had developed a trip generation manual recently in association with the 7 institutes. Even highway capacity manual also we have done for the 8 institutes of the various IITs and NITs and other institutes, sir. Similarly, trip generation manual also we have developed. This is also first time in India we developed a manual. This is useful for the forecasting of the demand. For example, any kind of the new building, new mall coming on any urban area. So what is the impact on the surrounding road network? This will give an idea, sir. So this was also inaugurated on 2nd September 2024. So another one is a comprehensive mobility plan. We have done a lot of studies in comprehensive mobility plans, but throughout India. Currently we are doing Nainital we are doing, sir, currently. So Nainital has been given the comprehensive mobility plan. मुख्य उद्देश्य है, for example, आज का population क्या है, आपका vehicle population, and after 15 years what kind of the facilities are required for the city, whether it is a light rail transportation system is required or mass rapid transportation is required. These kind of facilities can be studied based on the forecasting of the demand. We have the models are there, softwares are there, like trip generation, distribution, 4-level studies are there, sir. So now we Rajasthan we have researched 6 cities and we have completed and submitted comprehensive mobility plan, sir. So this is one of the capabilities of the CRRI and a traffic engineering and transportation planning. So another one is the road maintenance management system. So it is called as a RAM, road asset management system. So in India almost 10,000 lane kilometers, more than 10,000 lane kilometers we have done in a different states, Odisha and Karnataka, and currently we have received going to receive by NCR studies to reduce the pollution in the NCR states. So this kind of the vehicle, network survey vehicle we are using to study the deterioration of the road and also potholes and other kind of the longitudinal cracks and other areas. This can be studied, sir, using the network survey vehicle. And particularly the advanced road and airfield asset management also we have studied, and also condition based assessment management system. For example, what is the condition of the road, rating of the system, then we will suggest the corrective measures, sir. That is the main intention of the road asset management system.
So coming to CRI technology, these are the technologies we have developed. I think you have explored now. So that is the main intention. Like first we have the lab visit, like you can able to understand the background of the technology. Then these are the technologies we have developed: remote pilot, aerial vehicle bridge monitoring system. You have already seen frequency-based noise barriers, trip generation manual, EV charge software, mobile cold mixer cum paver, road embankment and road asset management, bridges and roads, and steel slag roads, Ecofix pothole repair, biobitumen, and IRASA, sir, artificial intelligence based road safety we have studied for Nagpur city, and also the like interurban corridor Hyderabad to Vijayawada, Hyderabad to Nagpur, and Hyderabad to Bangalore. These studies we have studied, and after 2 years we have identified that 50% accident can be reduced by using the artificial intelligence based technology, sir. And comprehensive mobility plan, AA vehicle counting and classification system, and ResuPave and ResuBit. These are the successfully implemented on the various locations throughout India, sir. And coming to biobender, I think you have seen the demo, all kind of how the biobitumen from agriculture waste for utilization in bituminous road construction. So this was inaugurated, technologies transferred to various industry partners. Initially 14 companies we have transferred on January 7th, 2026, and after that we have transferred to 9 companies. So total it was spread across the India, and you can see we have implemented in NS40 and also NS44. So recently we have received development of biobender from agriculture waste for utilization in bituminous road construction, sponsored by MORE. 2026 we have received the project, sir. And also we are planning to develop a lab, National Biobender Research Center, sponsored by MORE. Recently 2 days back we have received the letter, and as you said rightly, your advices during the biobender kind of the various other applications, various other wastes can be studied in this lab. So this is a very useful for the future generation. And coming to the already mixed seal surfacing MSS plus, so both low volume roads we can able to investigate. This was a successful technology implemented on the various low volume roads, sir. And this was already implemented in Uttar Pradesh and other areas, sir. And also the Uttar Pradesh Prime Minister was already inaugurated for this technology for the 2002 kilometers on green roads in the UP state. And coming to the FDR, another technology, sir, this was implemented UP and as well as the Andhra Pradesh state. So what is the benefit of the FDR in normal condition? For example, normal overlay and other kind of, instead of overlay, we can go for the FDR technology. It is a complete replacement from the subgrade to the, and complete layer can be changed by reducing the thickness. So this was studied, investigated, 2% cement, 3%, 4%, 5%. How much percentage cement optimum for replacing the FDR construction? This was studied. Dr. G. Bharat is working in this area. Sir, coming to regarding to the Delhi, so we have developed a guidelines for the standard framework for the controlling dust pollution from roads in Delhi NCR area, sir. So almost 10,000 kilometers road within the NCR area. So we have a MOU with the various chief secretaries of NCR, and we have submitted technical proposal. The main objective of this study is to develop not only taking care of the road asset management system. So plantation, what kind of the plants to be provided in the median and the unsurfaced area, and also the greening and paving. So if you making the greening in the median and as well as in the footpath, so how the dust can be controlled, this can be studied, sir. We have this project will be going to receive by end of this month. So then within 2 years we can come with a guidelines, sir. What kind of the guidelines, and also not only for that, skill development through CSR integrating technology, integrating skill initiative, sir. As you told in the beginning initial meeting, 4,000 engineers and students were trained in this institute in last 5 years. Also we have conducted a 15-day certificate program course, road safety audit, 15 batches, almost 997 students were trained, not only students, and various engineers from different agencies, public institutes and also the private institutes. We have given a training, sir. So we had a MOU with MORE, and we are further requesting ministry to extend the MOU, because we have the qualified scientists, and we have almost 77 scientists, qualified scientists are there. So if the MOU can be extended, it will be benefit to the Indian society. So I am humble request for the minister.
And sir, another one is that we are also conducting a PhD program, ACSR program. So now currently we are having the more than 100 PhD students throughout the India, and this PhD is different than the IIT and NITs because the application industrial based PhD, sir. So currently more than 100 students are working in the institute. So finally, sir, we have the knowledge network. We have like MOU with IITs, NITs, and other stakeholders like various private and government agencies. So future, we would like to develop three kind of things. One is the AML lab, artificial intelligence based lab, and biobender, which was sponsored by the ministry, and also like the major achievement required for the society is like guidelines for the air quality. So for the NCR-CRRI. So with this, I would like to thank you, sir, coming to our institute and listening like all work CRRI, and also patiently walk through the entire the institute, and also understand, and also you have given a guidance to our scientists, particularly different geotechnical applications as well as the flexible payment application. Thank you all, and Jai Hind. Thank you so much, sir, for giving insights into Institute's achievements and the way forward. May I please call upon Dr. E. Madhu now to give a brief introduction of our chief guest. Respected dignitaries on the dais, colleagues from MORTH, colleagues from CRRI, good afternoon to all. It is my privilege to introduce our chief guest, Sri Ajay Tamta ji, Minister for Road Transport and Highways, Government of India, for the function titled National Technology Day. Sri Ajay Tamta ji is a distinguished political leader from Uttarakhand and a respected member of parliament from the Almora Lok Sabha constituency. Born on 16th July 1972 in Almora. Sir, on the same day, CRRI's foundation day is also falling on the same day, and it was established in 1952, and we are going to celebrating the platinum jubilee starting from 16th July of this year. He has dedicated his life to public service, social welfare, and the development of hilly region of Uttarakhand. As a senior leader of Bharatiya Janata Party, he has played an important role in promoting rural development, road connectivity, infrastructure growth, social justice, and welfare initiatives for marginalized communities. Sri Ajay Tamta ji has served in several important responsibilities in public life. He served as Minister for State in the Ministry of Textiles, Government of India, from 2016 to 2019, where he contributed towards the promotion of the textile sector, traditional crafts, handloom industries, and employment generation. Currently, he is serving as Minister for State for Road Transport and Highways, Government of India, where he is contributing significantly towards strengthening national highway infrastructure, road safety, connectivity across the country. He has also been associated with the various initiatives related to national infrastructure development, road transport, and regional connectivity under the leadership of Sri Narendra Modi ji. Throughout his parliamentary career, he has consistently raised issues concerning the development of remote and hilly areas, better transport infrastructure, tourism promotion, youth empowerment, border area development, and improved livelihood opportunities in Uttarakhand. Known for his simplicity, dedication, and people-centric approach, Sri Ajay Tamta ji continues to work tirelessly for inclusive growth, national development, and public welfare. Sir, it is very fortunate and honored to have you in this institute for this National Technology Day celebration. So we are once again welcoming you for this institute and request you to deliver your chief guest address. Thank you. हिंदी सबके समझ में आता है ना? मैं आज आपने जो एक कार्यक्रम रखा है, मुझे मालूम नहीं था कि आप इस प्रकार का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं तो
आपके इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को समझने के लिए आया था आपसे बात करके कि हम देश भर के अंदर जो रोडों को बनाने का काम कर रहे हैं उसमें आपकी रिसर्च, आपके इनोवेशन, आपके आइडियाज़, आपकी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हम लोग कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं ये जानने के लिए यहाँ आया था। और मुझे मालूम नहीं था कि आज आपने इस कार्यक्रम में ही, अच्छा है कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य भी है, हम सबके लिए भी सौभाग्य, पूरे देशवासियों के लिए भी। 98 में जिस प्रकार से पोखरण की शक्ति से पूरे देश दुनिया में भारत की विशेष पहचान बनी, और मैं समझता हूँ कि देश को उसी दिन के बाद जानने का अवसर भी मिला कि भारत अब वो देश नहीं है जिसके पास ये महाशक्ति के रूप में जो पोखरण का विस्फोट करके पूरे दुनिया को बताया अटल जी ने, कि अब वो भारत नहीं है, हम भी अब शक्तिशाली भारत है, जवाब देने में भी सक्षम है, दुनिया की प्रतिस्पर्धा वाले देशों में भी भारत का नाम अंकित हुआ है। ऐसे आज के आपने टेक्नोलॉजी के इस दिन को आपने सेलिब्रेट करने का भी काम किया, मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ, डायरेक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को, और जितने लोग हैं बहुत शुभकामनाएं हैं। सौभाग्य से आपने ये कार्यक्रम भी इसमें जोड़ लिया, और इसलिए मैं कुछ लिख कर भी लेकर नहीं आया था कि मुझे बोलना क्या है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका काम तो भाई, जिसका काम ही सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप तो दिन रात, हम तो खाली रोड को बोलते हैं, हम तो पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन का काम क्या होता है कि कार्यक्रम हुआ, और जिस जगह पे कार्यक्रम होता है, जिस स्टेट में कार्यक्रम होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम होता है, जो लोग वहाँ पर जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद है, एमएलए है, प्रधान है, तो कहते हैं साहब की रोड चाहिए, तो हम तो घोषणा ही कर सकते हैं। अब बोल ही सकते हैं कि भाई इंजीनियर को कि भाई इसका रोड बनाने का प्लानिंग करो, डीपीआर बनाओ, कैसे रोड बनेगी, रोड कैसे पहुंच सकती है, कितना खर्चा आएगा, फंड्स कितना लगेगा, ये चीज़ें हम कर पाते हैं। और इसलिए क्या है कि मेरा फील्ड और आपके फील्ड में धरती आसमान का अंतर वैसे है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग भाषण दे सकते हैं अच्छे से, नो डाउट, मगर टेक्नोलॉजी को तो आप ही लोग जानते हैं ना। मगर मेरा कुल मिला करके, क्योंकि मेरा अलग अलग विंग्स रहा है और काफ़ी लंबे समय तक मुझे देश में तो अवसर मिला ही है, राज्य में भी मुझे अपने पहाड़ी क्षेत्र के राज्य में अवसर मिला है। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया भी कि जो हमारे देश में जहाँ जहाँ भी हमें रोड डेवलपमेंट के सेक्टर में कुछ करने की आवश्यकता है, तो उसमें जो वहाँ के का जो सिस्टम है, हम कहीं समुद्र के किनारे भी हमें रोड बनानी है, तो कहीं मैदान में भी रोड बनानी है, तो कहीं पहाड़ में भी रोड बनानी है, तो कहीं ऐसी जगह भी रोड बनानी है जहाँ 6 महीना मेरी रोड बर्फ के नीचे दबी रहनी है। आपके ध्यान में होगा, क्योंकि मैं जिस पार्लियामेंट से आता हूँ, मेरे वहाँ, अब आप जाएंगे कभी, आप, मैं सुना नहीं होगा, मैं 3 दिन पहले वहीं से आया हूँ, आदि कैलाश, गुंजी, कुट्टी, दारमा वैली। अब इसमें से आप में समझ में ही नहीं आया होगा कि दारमा वैली क्या है, लीपू लेक क्या है। लीपू लेक ऐसा बॉर्डर है जहाँ से चाइना शुरू होता है और भारत शुरू होता है, तो इसलिए गुंजी जिसका नाम लिया, ये गुंजी मेरे देश का, यहाँ बैठ के आप कहोगे अंतिम गांव है, मगर वहाँ से शुरू करोगे तो पहला गांव है। तो इसलिए गुंजी में जो रोड बनती है, तो उस जगह में रहने वाले लोग, वो माइग्रेटेड लोग हैं, वो 6 महीना ऊपर रहते हैं और 6 महीना नीचे आ जाते हैं, क्योंकि 6 महीना वहाँ 6 से 7 फीट 8 फीट घर भी बर्फ के नीचे दबे रहते हैं और रोड भी दबी रहती है, तो वो गलती है, बर्फ, फिर तो रोड का क्या हाल होता है आप जानते ही हैं। तो इसलिए ऑल वेदर रोड का कॉन्सेप्ट 2017 में आया। तो ऑल वेदर रोड को हमने 2 बार, पहली बार हमने घोषणा की और जो 4 धाम है उसके लिए शुरू किया, और बड़ा सौभाग्य है कि आज वहाँ हमारी रोड बन के तैयार है, ऑल वेदर रोड बन के तैयार है। मगर एक जानकारी आप सबके ध्यान में भी आती है कि रोड को बनाने के लिए आप टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करते हैं कि रोड कैसी होनी चाहिए, कौन सी रोड लंबे समय तक रहेगी, किन किन चीज़ों से हम रोडों को बना सकते हैं, मगर उन सब से भी बड़ी कठिनाई है कि रोड के निर्माण के समय जो आने वाली कठिनाई है। आज अगर मैं बोलता हूं कि लीपू लेक तक रोड गई, दर्रे तक 14,500 फीट में
काम करना आदमी का, ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन है। आपको उतरते ही, अगर चौपर से आपको उतरते ही चलने के लिए बोलूंगा, कितना भी स्वस्थ आदमी होगा तो 4 कदम के बाद बैठ जाएगा। बैठेगा या नहीं बैठेगा? अरे आप भी तो मेरे साथ साथ में शेयर करो, मुझे लग रहा है मुझे अकेले बोल रहा हूं, होगा ना। और वहां पर चलने वाली मशीन को भी कम ताकत लगती है, आपको मालूम है, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन कम रहती है तो जो वहां पर चलने वाली पोकलैंड है, मशीनें हैं, वो भी बड़ी उतना वर्क नहीं कर पाती। दूसरा कि हमको वहां मशीनें हाइट में पहुंचाने से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि नीचे से अगर रोड बनाने के लिए आदमी जब रोड कटिंग करता है तो ऊपर से जो पहाड़ का भौगोलिक जो उसका बनी हुई स्ट्रक्चर है वो पूरा लेयर ही नीचे आता है और कई लोग दब के मर जाते हैं, रोड बनाने वाला भी दब के मर जाता है, मशीनें भी बह जाती हैं। तो इसलिए हमने उन परेशानियों को देखते हुए, स्वयं मैं इसमें खुद भी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, तो हमने कहा भाई रोड बनानी है तो हमने कहा हमको इस्तेमाल करना है कि ऊपर चले जाओ, वहां से मशीन चला के लाओ। तो हमने चिनोक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आपने सुना है चिनोक चॉपर, तो ताकत बहुत होती है उसकी, तो उसको हमने पार्ट पार्ट में मशीनें ऊपर पहुंचाई, तब जाके ऊपर से मशीनों को रोड काट के ला कर आए। आज हमारी रोडें बन गई हैं, जहां जाने में हमारे फौजी भाई को, हम सब लोग 140 करोड़ लोग, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारा घर परिवार तभी ठीक से चल पा रहा है जब हमारे बॉर्डर में सैनिक ठीक से काम कर रहे हैं। उसकी चिंता नहीं है हमें कि देश में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम अपने काम में लगनशील से कर रहे हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। आज पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बनी जा रही है, वहाँ के साइंटिस्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ के लोग भी काम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए क्या है कि वहाँ 6, 7, 8 दिन, जिनको आपने नाम सुना होगा मालपा, सुना है, 100% पुराने लोगों ने सुना होगा, तो मालपा की घटना घटी, ऐसी हजारों घटनाएं वहाँ घटी हैं, और सैनिकों को वहाँ जाने में भी बहुत बड़ी समस्या होती है आज, क्योंकि सैनिक को खुद भी नहीं जाना है, सैनिक को शस्त्र के साथ जाना है, सिस्टम के साथ जाना है। तो आज मेरा सैनिक वहाँ सीधे रोड से जाता है, और इसलिए अब जो हम रोडें बना रहे हैं, आपके ध्यान में होगा कि हिमालय के अंदर से हिमालय की रोडें बन रही हैं। यहाँ उत्तराखंड के चाइना और नेपाल के बॉर्डर से शुरू होने वाली रोड, जो कि आदि कैलाश होते हुए, जोलिंगकोंग होते हुए मिलम जाएगी, और मिलम से टोपी ढूंगा, आपने नाम नहीं सुना हो, टोपी ढूंगा होते हुए मलारी जाएगी, बद्रीनाथ केदारनाथ, और वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए लाहौल स्पीति होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी हिमालय के बॉर्डर से। यानी कि हिमालय के अंदर ही रोड बन रही है। कई जगह टनल्स बनेंगी। अभी आपने सुना होगा कि एक अटल टनल का शुभारंभ हुआ है, जो कि जिस रोड पे चलने के लिए पूरा दिन लगता था और 6 महीना बंद रहती थी रोड, क्योंकि बर्फ रहती थी, तो पूरे दुनिया से लाहौल स्पीति का कटअप होता था, तो आज वहां पर 9 किलोमीटर की टनल है, और वो टनल के माध्यम से हम जो है एक दिन का सफर 5 मिनट में कर लेते हैं। वो सिर्फ आप लोगों की दी हुई टेक्नोलॉजी है, आप सबकी रिसर्च हमारे काम आ रही है। इसलिए आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका अध्ययन, आपका रिसर्च हमारे रोड मैन्युफैक्चरिंग के काम में बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। अभी देश की बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी विटामिन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बोला कि भाई बायो विटामिन के लिए आप लोग R&D कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10%, 20% को लैंडिंग करने के लिए बोला ही है। हमारी साइंटिस्ट यहाँ पर भी आपके बीच में भी हैं, हमारे बहुत सारे और भी लोग हैं, उसको भी जोड़ के कैसे हम अपने इंपोर्ट को घटाएं। करीब 50% हमको विटामिन इंपोर्ट करना पड़ता है, कई लाख रुपया हमारा विदेश चला जाता है। तो क्यों नहीं हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा, क्योंकि बनना तो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी आइटम है। अब रिफाइनरी आइटम की समस्या पूरे देश में ही हो रही है, फ्यूल की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आज हम कैसे ऐसी चीज़ों का कोई अल्टरनेट, हम कोई ऐसा रास्ता निकाल के अपनी पढ़ाई और प्रतिभा और रिसर्च का परिणाम दे करके जो देश के काम आ सकती है, उस पर हम काम करें, कर ही रहे हैं। अभी बात आई कि भाई एग्रीगेट के लिए हमने जो जहाँ इस आयरन फैक्ट्री है उनके जो, या जिंक फैक्ट्री है, जिनसे निकलने वाला वेस्ट है, उसको कैसे हम अपने उपयोगी बनाएं रोड के लिए। इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर पूरे देश भर के अंदर हैं, उनको भी रिसाइकिल करके किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अपने रोड नेटवर्क में हम दोबारा से मिलाएं, एग्रीकल्चर में भी उसका वेस्ट काम आए, हमारे बिटुमेन में भी उसका जो पेट्रो प्रोडक्ट्स बर्बाद हुए हैं
उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, और जहाँ एग्रीगेट निकल रहा है उसको भी हम रोड के अंदर डाल सकते हैं। ये अच्छा है कि हमारी 2 समस्याओं का समाधान होगा। एक पर्यावरण के साथ होने वाला जो दुष्प्रभाव हम सबके शरीर के अंदर बिना पूछे चला जा रहा है, उससे भी बचा सकते हैं। और दूसरा जो ये वेस्ट है, इस वेस्ट को हम कैसे रिसाइकल करके यूज़ का बहुत बड़ा केंद्र बना सकते हैं। ये आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और मुझे बड़ी खुशी भी है। और आपका जो हमारे ख़ास तौर पर स्लो प्रोडक्शन के लिए हमारा सबसे बड़ा डेंजर प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड और हिमाचल, ये सारी जितनी भी हम रोडें बनाते हैं, उस रोड्स के में जब भी हम 1 लेन या इंटीग्रेटेड रोड को 2 लेन में चेंज करते हैं, तो हमारा पहाड़ में जो रोड बनाने में जितना पैसा लगता है, उसका कई गुना पैसा बाद में बार-बार से मलबा आने के कारण से रोड सेफ्टी के लिए, रोड स्लोप प्रोटेक्शन में पैसा बहुत बड़ा वेस्ट होता है। उस पर कुछ इस प्रकार की अब हमने अपने डीपीआर में भी अब नया चेंज किया है। हम नए चेंज कर रहे हैं कि अब जब तक हम नई फ्रेश रोड या रोड को बड़ा करने के लिए सिंगल रोड को या इंटरमीडिएट रोड को 2 लेन करेंगे, तो 2 लेन से पहले हम रोड के ब्लैक टॉप और बाकी रोड बनाने की काम को तभी पूरा करेंगे जब हम स्लोप प्रोटेक्शन का काम पूरा कर लेंगे। तो ऐसा करने के कारण से हमारा पैसा बार-बार वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो हमको बहुत बड़ा पैसा बर्बाद करना पड़ता है। तो आप सबकी रिसर्च हमारे काम आती है। आप जियो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप बायो इस पे काम कर रहे हो भाई कि कैसे हम बिटवीन को करें अच्छे एग्रीगेट। अब त्रिपुरा की समस्या क्या है, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट को देखता ही हूँ, बाकी एनएचएआई के काम को देखता हूँ, तो त्रिपुरा में आपको एग्रीगेट मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल वहाँ है ही नहीं। अब आपको रोड बनाने का खर्चा वहाँ पर हमको 4 गुना ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? सारा ट्रांसपोर्ट है, गुवाहाटी से जाएगा या कहीं और जगह से जाएगा। अभी आप सबका रिसर्च यही है कि हम वहाँ पर लोकल या किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से त्रिपुरा के अंदर रोड के निर्माण में कम खर्चे में अच्छी रोड्स बना पाएँ। ये आप लोगों को करना चाहिए। हम यहाँ पर को मिशन मूड में जो हमारे बायो आप जितना विटामिन बनाने के लिए सोच रहे हैं, उस पर जो हमारे देश की अब उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है, वो क्या है कि पूरा फायर सीजन में, क्योंकि 85% फॉरेस्ट एरिया है, उत्तराखंड ही नहीं हिमालय एरिया में जितनी भी जगह है, और उत्तराखंड में तो खास तौर पे इसलिए क्योंकि यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल में पाइन बहुत बड़ा फॉरेस्ट का। इस पेड़ को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरली लग जाता है। एक जगह से दूसरे इसके सीड अपने आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अपने आप फॉरेस्ट बन जाता है। भले ही हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा उसके अंदर हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है, और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके निकलने वाले लिग्नेंट से बिरोजा है, बार्निस है, तारपिन तेल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मगर उसके पाइन नीडल को हम यूज़ नहीं कर पाते। अभी कुछ समय पहले पाइन नीडल पे मैंने कुछ काम किया था, तो हमने उसके पैलेट्स बना के ईंधन बनाने का काम किया, जिससे कि अच्छा, क्योंकि उसमें एस कंटेंट जो है वो 3% है, और उसका जो फ्लेम है, आई मीन उसकी बहुत अच्छी ताकत है, तो उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो 700 डिग्री टेम्परेचर तक हम उसको ले जा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कर ही रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी क्या हम उसके द्वारा बनने वाले विटामिन का कहीं देश में काम कर सकते हैं, और वहाँ के फायर का प्रॉब्लम भी हम दूर कर सकते हैं। फायर के प्रॉब्लम से बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जंगलों में रहने वाले जीव जंतु भी उस आग की चपेट में आते हैं, और जो वहाँ डेंजर खतरनाक है, आप सुनते ही होंगे कि पहाड़ों के अंदर जो लेपर्ड है, ये है, वो तो उसको कुछ मिलता नहीं खाने के लिए, फिर वो शहरी क्षेत्र में अटैक करते हैं, और इससे बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे कहना यही है कि आप सब लोग अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका तो जो ये इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च रोड पे ही करने वाला है, और इसलिए दुनिया भर की रोडों पर आप लोग काम कर ही रहे हैं। एक आंकड़ों के साथ हम लोग भी काम करें। हिमालय से लेकर समुद्र तक हम लोग रोड बनाते हैं। समुद्र में बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, चाहे वो पुलों का है, वो ज़्यादा लंबा समय नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर जो स्टील का उपयोग करते हैं वो लंबे समय तक नहीं रहता। अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, अब ग्लास फाइबर भी आ गया है और बसाल्ट फाइबर भी आ गया है। उस पे भी हम R&D करके कैसे हम अपने IRC को, इंडियन रोड कांग्रेस के साथ मिल करके अपने रोड निर्माण के काम में कैसे कर सकते हैं। हिल की कटिंग कम करते हुए वैली साइड में भी किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, पहाड़ को कम काटते हुए रोड को
कहना चाहिए कि कैस्केटिंग में बना के ऊपर और नीचे। आप में से नैनीताल कोई गए हैं क्या? गए हैं? अरे हाथ खड़ा करो। हाँ, तब तो मालूम है। एक ठंडी आपको वाले मल्ली ताल से तल्ली ताल जब आते हैं तो आपने देखा होगा तल्ली ताल वाली रोड नीचे है और मल्ली ताल वाली रोड ऊपर है। तो ऐसे कैस्केटिंग में रोड बना सकते हैं क्या? क्योंकि उससे रोड डैमेजेस कम होती हैं। ये मैंने भी सब्जेक्ट रखे हैं बहुत सारे अपने मिनिस्ट्री में, और वो आप ही के पास आने हैं दौड़ के कहीं ना कहीं से। तो इसलिए क्योंकि रिसर्च करने वाले लोग आप ही हैं, तो इसलिए इस तरीके का काम करके अच्छी मजबूत बढ़िया रोड, क्योंकि रोड के काम में आज पूरे देश में हम नंबर 1, दुनिया में भी नंबर 1 में जा रहे हैं। 1.5 लाख किलोमीटर तो मेरा NH ही है। उसके बाद जो स्टेट हाईवेज हैं वो हमको पता ही नहीं है, वो अलग हैं। उसके बाद जो PMGSY की रोडें जो आज गांव को जोड़ रही हैं, 150 के हर एक गांव को जोड़ने का काम कर रही हैं, वो रोड अलग हैं। और बाकी जो है कि पर्सनल और प्राइवेट रोड लोग मिलाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में इतनी रोड कहीं बनी होंगी। इसलिए आप सब लोग 2047 के विजनरी लोग हो। हम लोग इन जितने सीनियर साइंटिस्ट हैं और जितने हमारे जूनियर स्टूडेंट भी हैं जो PhD कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उस विजन को लेकर के काम करें। आप में से मेरे लोगों को बहुत सारी बातें अच्छी लग रही है, इसलिए थोड़ा नींद भी आ रही है ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे सपने हो, इसलिए सपने को मजबूती के साथ लाकर कोई कुछ ना कुछ हर एक बच्चे को अपना अपना कोई ना कोई रिसर्च देना चाहिए। और वो रिसर्च पेपर ही नहीं होना चाहिए, वो आपका रिसर्च पेपर नहीं होना चाहिए, वो रिसर्च आपका इंडस्ट्री में आना चाहिए, वो रिसर्च देश की रोड के निर्माण में आना चाहिए। दिखना चाहिए कि ये रोड मैंने रिसर्च किया, ये रोड मेरे से बनी है। तभी आपका रिसर्च भी सफल है, तभी आपकी पढ़ाई और शिक्षा और ये इंस्टीट्यूशन का मतलब भी सक्सेसफुल है। बाकी तो मुझे ज़्यादा आता नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेरा भले ही मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, मेरे फादर खुद ही इंजीनियर हैं, मेरी मदर भी इंजीनियर रही है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इंटरेस्ट है। मैं पहली बार आपके रोड में मंत्री बनने के बाद आया हूँ, नहीं तो मैं हर 3 महीने में सबसे पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट ही जाता हूँ। इसलिए जब मैं टेक्सटाइल का मंत्री बना तो मैं निट्रा गया, सिट्रा गया, सस्मीरा गया, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो आज सौभाग्य है कि आज टेक्सटाइल में नेचुरल फाइबर का सबसे बड़ा बजट भारत सरकार ने अलॉट किया है, जो कि रिसर्च होगा तो देश के अंदर ही हम अपना नेचुरल फाइबर को बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और नेचुरल फाइबर को प्रमोट कर सकते हैं, और हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा जो नेचुरल फाइबर है। और मैनमेड फाइबर को तो हम देश के अंदर बना ही लेते हैं। आजकल तो क्या है कि पानी पीने वाली बोतल को भी आप अच्छे फाइबर में ट्रांसफ़र करके अच्छी साड़ी भी पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये रिसर्च का ही परिणाम है। आप सब जैसे ही लोगों ने रिसर्च किया है, तभी पानी की पीने वाली वेस्ट बोतल से भी हम अच्छी साड़ी बना सकते हैं, ये आप ही लोग। तो इसलिए अभी और अच्छा क्या रिसर्च हम लोग कर सकते हैं कि जिस दिन कहें कि भाई कोई बात नहीं, जो 50% हमको बिटवीन इंपोर्ट करना है, हम सारे रिसाइकिल के बाकी वेस्ट मटेरियल से हम बायो से बना के हम कैसे ना कैसे हम इंपोर्ट को ही ख़त्म कर देंगे। हम देश के अंदर इस चीज़ का बना देंगे। हम एग्रीगेट की समस्या त्रिपुरा के अंदर ख़त्म कर देंगे। हम ऐसे इनोवेशन, ऐसे आइडियाज़ को हम बनाएंगे जो पेपरों तक ना रहे, इंडस्ट्री तक आए, ज़मीन में हकीकत उतरे। जब हम कर पाते हैं तो सच्चे मायने में मेरी पढ़ाई मेरे माँ बाप के सामने और मेरे पढ़ाने वाले के सामने सक्सेसफुल स्टोरी रहेगी। और इसीलिए 2047 के विजन को हम देखेंगे। बोलिए भारत माता की। करेंगे ना सब लोग काम? बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस अत्यंत प्रेरणादायक संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन टुडे। May I now request Director Ravi Sekhar sir to kindly felicitate our chief guest Shri Ajay Tamta ji as a token of our gratitude and respect. Huge round of applause. Sir. May I also request Shri Budurkan ji
Director Mort to please join us on stage, and Director Sir to please felicitate him as well. May I also request Nikhil ji to please join us. May I request Rajesh Gupta ji to please join us, and Director Sir to please felicitate him. राजेश जी का नाम लेना भूल गया। आप 2 बार दिल्ली से एमएलए रहे हैं और एमएलए तब रहे कि पहले दिन अमेरिका से आए और दूसरे दिन एमएलए का टिकट मिल गया। अमेरिका का रहने वाला थोड़ा पढ़ा लिखा ही आदमी होगा। तो बहुत टेक्नोलॉजी में आपकी आती। To conclude the formal session, I invite Dr. Vinod Karar, Chief Scientist and Head PME, to deliver the vote of thanks. Please, sir. Honourable Minister of Road Transport and Highways, Shri Ajay Tamta ji, Dr. CSIR-CRRI, Director CSIR-CRRI, distinguished guests from North, Honourable MP Shri Gupta ji, Team CSIR-CRRI, distinguished guests, media personnel, students, ladies and gentlemen. As we conclude this memorable Technology Day celebrations, it is my honor to propose the vote of thanks on behalf of CSIR-CRRI. We express our deepest gratitude to Honourable Minister Shri Ajay Tamta ji for gracing this occasion as Chief Guest, sir. Despite your busy schedule, you visited our labs, interacted with our scientists, and inspired us with your motivational address. Your encouragement and vision for India's road infrastructure, especially for hilly region, will keep motivating the CSIR-CRRI family. Your presence has made our National Technology Day celebrations very, very special, sir. Thank you, sir. Our sincere thanks to Team Morth for their presence and the enduring partnership that has enabled so much of our research and its field application. I thank Dr. CSIR-CRRI, Director CSIR-CRRI, for his leadership, guidance, and planning. Heartfelt thanks to Dr. E. Madhu, Dr. K. Ravinder, and his team, PME team, Dr. Abhishek Mittal and his ESD team, administration, stores, purchase, finance section, for their direct and indirect contribution in making the program possible and successful. A heartfelt thank to the entire CSIR-CRRI team who worked tirelessly to make this day special. Finally, I thank all the distinguished guests, CSIR-CRRI family members, students, media personnel for joining us. With your support, CSIR-CRRI will serve the nation with greater resolve in our Platinum Jubilee year. Thank you all and Jai Hind. May I request everybody in the auditorium to please stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। With this, we conclude today's celebration of National Technology Day. Refreshment boxes will be served in the auditorium. Yeah. Refreshment boxes will be served in the auditorium.